English.com, he can open that site on laptop and then he can see who are all live and then he can join. Oh, that's nice. But Yeah. can you On web type? version, it is possible. Can you chat to which site? Can you chat me? Yes. helloenglish.com. helloenglish.com पे सनी आप जाइए सीधा क्रोम से और वहां आप वो करिए। क्रोम के अलावा कुछ और मत यूज करिएगा, क्योंकि मुझे भी, मेरे पास ऐसे मैक है लेकिन ये सफारी में ये ओपन नहीं होती, तो मैं भी क्रोम यूज करती हूँ। Okay, thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम। चलिए, so guys, moving ahead to the next slide. I dash every day before going to bed. I pray or pray. सब आपने डाइट लिखा है। आकाश डॉग डाइट लास्ट मंथ। डाइट खाने वाली होती है, डाइट। स्पेलिंग ठीक करिए। दीपेंद्र प्लीज आंसर। Second one is the right answer. I pray every day before going to bed. So guys, pray, P-R-A-Y, is puja karna, to thank your God, to worship your God is to pray. The first pray, which has E in the spelling, P-R-E-Y, is a noun which means shikar. Right? Pray. प्रे का मतलब होगा एग्जैक्ट प्रार्थना। जी, दो प्रे है ना हमारे पास, तो नीचे वाले का मतलब है प्रार्थना, ऊपर वाले प्रे का मतलब है शिकार। फॉर एग्जाम्पल, द लायन इज ईटिंग हिज प्रे, अपने शिकार को खा रहा है। और लायन मैम फिर यहाँ प्रेडेटर हो जाए। प्रेडेटर, यस, प्रेडेटर एंड प्रे। जी, तो जैसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं, तो एक होता है हमारा प्रेडेटर जो खाने वाला होता है, जो ज्यादा वो होता है शक्तिशाली, उसे हम प्रेडेटर बोलते हैं। सो प्रे इज एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। तो ये जानवरों के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसको हम हंट करते हैं। हंट का मतलब शिकार करना, और फिर किल मारना और उसे खाना, ठीक है। तो प्रे, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से डियर। डियर होते हैं ना, हिरन, वो हमेशा क्या होते हैं, प्रे होते हैं किसके, लायन के, टाइगर्स के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Please be dash, the baby is sleeping. Please be quiet or quiet. तो pronunciation में भी थोड़ा सा difference है guys. She had just recovered from jaundice. She was looking very okay. Whoever is this dot person, she के साथ had नहीं आएगा, as you are already using just. Just का मतलब है अभी अभी, present perfect tense होगा, ये had हटाइए, have लगाइए। She has, have भी नहीं has, she has just recovered from jaundice. सबश्रीक, आपने भी had लिखा है, क्या हो गया सबको? चलिए, let's discuss the answer. Gautam Kedar, after so long in the class. Wow. Gautam, please answer. Yes, ma'am. My exam was going on. That's why I was engaged in exam preparation. Okay, good to see you Ma'am, again. second one is correct. Yes, spelling. Quiet. Quiet. Please. Q-U-I-E-T. Yes. Sentence. Please be quiet. The baby is sleeping. So guys, quiet is चुप हो जाना, प्लीज चुप हो जाओ, बट बेबी सो रहा है, राइट। अगर आपके घर में कोई बेबी है तो आपको पता होगा ये चीज मैंडेटरी होती है, क्योंकि अगर आप उनके सामने बोलते हैं वो उठ जाते हैं और फिर रोना शुरू हो जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं। सो दिस इज क्वाइट। जैसे मैं भी बोलूँ क्लास में, प्लीज बी क्वाइट गाइज, लेट्स स्टडी। आपने अपने स्कूल में भी वर्ड सुना होगा, कीप क्वाइट। तो प्रोनाउंसिएशन इसकी एट है, क्वाइट। फर्स्ट वाला वर्ड जो है ऑप्शन में हमारे, वो क्वाइट है, क्वाइट, ठीक है। इट और अट का डिफरेंस है गाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड क्वाइट? काफी, मतलब थोड़ा, काफी। यस, आई एम क्वाइट बिजी टुडे। आज मैं काफी बिजी हूँ। थोड़ा नहीं होगा, काफी होगा हिंदी में, ठीक है। आई एम क्वाइट बिजी। दिस पिज्जा इज क्वाइट टेस्टी। ये पिज्जा काफी टेस्टी है।
I am quite happy. मैं काफी खुश हूँ. Okay, so guys, please ध्यान दीजिए, ये आपका क्वांटिफायर होता है quite और quiet वाला. Okay, सनी सिंह आप हैंड रेस कर रहे थे. Do you have a question? नो मैम, आंसर मिल गया. मैं ये पूछ रहा था, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे क्वाइट को? QUIT. Yes. E. So guys, pronunciation भी different है, spelling भी different है. देखिए quite वाली जो pronunciation है उसमें T पहले है, तो हम quite पढ़ेंगे. E का हमने quit नहीं पढ़ना. quit नहीं, quit का मतलब होता है छोड़ देना, उसकी pronunciation अलग है. quit, quite, qua, it, बस it का ध्यान रखना है आपको. IT it पढ़ना है आपको. qua, it. फिर आ गया quiet. E और T को आपको मिलाना है. at, quiet, it, at. I hope this is clear. Moving ahead. Akbar was a dash ruler. He was a great ruler or he was a great ruler. On web version, it is possible to attend. Yes. Monica. First one, Akbar was a great ruler. Yes, spelling GREAT. So guys, great हम कहते हैं महान, बहुत अच्छा. तो अकबर बहुत अच्छा रूलर था. सेकंड ग्रेड का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? मैम कद्दूकस करना. कद्दूकस करना या सिर्फ कसना, उसे हम ग्रेड. गाजर भी कस कर सकते हैं, हलवा बना. यस, एग्जैक्टली. ओके, सो गाइस, ग्रेट करना. अब जैसे आजकल आप अगर पिज्जा लेते हैं तो पिज्जा के ऊपर जो चीज होती है वो ग्रेट करी हुई होती है. जैसे पिज्जा बना के लोग ऐसे ऐसे करके पूरे पिज्जा पे ग्रेट कर देते हैं चीज को. दिस इज कॉल्ड ग्रेट करना. अब आप जैसे गाजर का हलवा, सर्दियां आ रही हैं, गाजर का हलवा बनेगा, तो गाजरों को ग्रेट किया जाता है, ऐसे कसा जाता है, उसके बाद उन्हें उबाला जाता है और फिर उनका हलवा बनाया जाता है. राइट? सो ग्रेट, कसना, and GREAT, great, mahan. Moving ahead. This is not a fairy tale or fairy, TAIL, tale. हेलो एवरीवन. आज मेरे बच्चों के स्कूल में पार्टी है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको पार्टी से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है कि टिफिन में मम्मा क्या रखने वाली हैं. तो मैंने भी उनका टिफिन को स्पेशल करने गौरव, के लिए मैंने रखा बेबी को है वेस्ट पास्ता, पसंद है. जो मेरी बेटी ओके, को रोहित बहुत कुमार, पसंद प्लीज है. आंसर. बहुत डिलीशियस है ये. और 2 समोसे दिए हैं जो मैंने बाहर से मंगाए थे सुबह सुबह. और This is not a fairy tale. टेले? टेले थोड़ी, Yes. थोड़ी पढ़ रहे हैं आप जो हर वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे. टेल बोलिए, टेल, फेरी टेल. Okay. Okay. So guys, the first one is the correct option, although दोनों की pronunciation same है, but spelling और meaning difference है. TALE, tale is कहानी. ये कोई परियों की कहानी नहीं है, टेल कहानी. और दूसरा टेल, TAIL, come on tell me. पूंछ. पूंछ. तो हर जानवर की पूंछ होती है, राइट? ऐसा कोई जानवर है जिसकी पूंछ ना हो? नहीं, परिंदों की भी होती है, राइट? ह्यूमंस किंगडम एनिमलिया में ही आते हैं. Yes, we common animals, yes, right. So humans do not have any tail. Fortunately, कितने अजीब लगते हैं ना हम लोग, हमारी का टेल होती है. मैम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है. किस एज में होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब हम मतलब वॉर्म में होते हैं उस समय होता है. Womb में होते हैं, यस. हमारी ये होती है, कॉर्ड होती है, यस. तो वो टेल नहीं होती ना, वो हमारी नेवल से कनेक्टेड होती है. तो टेल पीछे होती है, दैट्स हमारी कॉर्ड होती है, जिससे हमें अपनी मम्मी क्या जो भी है वो खाना पीना खाती है वो हमें पहुंचता है. नो मैम, वो होता है मतलब कॉकिक्स जो होता है ना, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब पहले होता था, अब रूडिमेंट्री हो गया. मैम, it is there, it was, but now generation after generation it is changing, so it has been changed. Exactly, if you have read the history, so you will see the image of evolution of the man. That is evolution, yeah. कि बंदर से इंसान कैसे बने. Exactly. Yes. So earlier we were monkeys. Apes से. Exactly. Yes. Okay.
जैसे it is all about understanding or believing. I don't believe in this theory. No, ma'am. In Ma'am, embryonic it is true. present. He's talking No, about ma'am, something else. we Actually, have we are talking appendix. about No, we have appendix. It is our tail, which has extinct. No, no, Appendix. appendix is not a tail. Appendix Yeah. is another. guys. Yeah. Vishakha, Sachin, I want you to first mute yourself. Appendix आप लोग is क्या arisen from the बात कर mesoderm. रहे हैं? अभिषेक बात कर रहे हैं जब बेबी वूम में होता है, ठीक है? That's what we are talking about, ma'am. आप लोग Earlier, evolution की बात कर रहे हैं कि वो खत्म हो गई है. leave it. So guys, leave it. Tail is कहानी जिसकी स्पेलिंग है TALE कहानी. TAIL पूंछ. मैम एक टेल का मतलब बासी भी होता है. किसका मीनिंग? टेल ही होता है बासी, मतलब जैसे रोटी जो है, मतलब अगर एक दिन पुराना हो जाता है. Pronunciation टेल होती है उसकी, stale. This food is stale. Don't eat it. STALE pronunciation, उसमें S का sound आता है. Can you tell me your dash size, your waist size or waist size? Both the pronunciations are same. I don't think so that Akbar is great. Because Joshi, he is not alive anymore. So yes, he is not great. He was great. Was लगाइए अपने sentence में. Okay. Pratap. Yes, ma'am. Can you tell me your waist size, कमर का size? Waist spelling बताइए. WAIST. Yes, WAIST, waist guys हमारी कमर को कहते हैं. So if you ever go on shopping of your bottoms, like if you want to buy jeans, or if you want to buy a capri or pajamas, so the shopkeeper always asks you what is the size of your waist, right? So आपकी कमर का size क्या है? And the best way to, if you don't know the size, so the best way to measure your waist is to measuring your neck with the jeans or with the bottoms, whatever. और ये वाला भी होता है कि ऐसे आप अपने jeans पे ये वाला जितना आपका ये part होता है उतनी आपकी waist होती है. This is believed, okay? So yes, so waist is कमर and WASTE waist क्या होता है? बेकार. Waist पर बेकार चीज. खराब. Useless. So waste, it's you have wasted my time. तुमने मेरा time खराब किया है. तो खराब is waste. अब वो हम time के साथ भी use कर सकते हैं, चीजों के साथ भी use कर सकते हैं, right? Next slide. My favorite brand will not have a dash this time. Favorite brand will not have a sale or sale. ये भी हम discuss कर चुके हैं. So please don't make mistake. Even I don't believe believe in evolution, Karthik, but it is like individual's choice whether they want to believe what theory they want to believe. Okay, so yes, believe that. Because I believe अगर हम ape से evolve हुए होते तो आज फिर ape नहीं होने चाहिए थे. वो क्यों evolve नहीं हो रहे? Why there are monkeys? Why there are? मैम क्योंकि वो ape से पहले वाले से evolve हुए ना. हाँ ठीक है, चलिए वही है. अभिषेक अपने सोचने की बात है. But my friends and I, we have very different mindsets, and we have this conversation, we have this debate so many times about this stuff. So yeah, Big Bang Theory भी है, तो अपनी वो है choice, what you believe. All right. Okay, Preeti, please answer. Sorry. Okay, ma'am. My favorite brand will not have sale this time. Yes, so guys, brand हिंदी में बोलते हैं, brand English का word है, तो please मैं request करूंगी आप लोग brand ना बोले English में, brand ही pronounce करें इसे. So guys, what is a brand? First, let's discuss what is brand. Ma'am, mark, trademark. What? Trademark? Blade mark? No, ma'am, mark. Mark. MARK.
Mark, yes. Okay, we can say that. So guys, brand is a type of product measured by a particular company under a particular name. So we have so many brands, like if we are talking about clothing brands, so we have CK, Calvin Klein, we have Peter England, Louis Philippe, we have Raymond. US Helen Polo, so many, right? बहुत सारी हैं. Raymond, right? बहुत सारी brands हैं. And we have different brands of shoes as well, Adidas, Puma, Nike, yes, so many, Campus, Calceto, so many. So ये brands होते हैं because इनके proper अपने products होते हैं और अपनी manufacturing होती है under their brand name. So my favorite brand will not have a sale this time. So guys, आपको पता है ये brands पे sale होती है end of season sale जैसे मैंने बताया. तो इस महीने या इस बार मेरी favorite brand पे sale नहीं लगी है. Will not have a sale. SAIL sale, हम जो कश्ती वाला sale है वो है. The world dash talks have been going on since ages. The world peace or world peace. Can I try, ma'am? Abhishek, sorry, Abhay, you have already answered. So, Punita, please answer. Punita, now it's your turn. Sachin. The world peace talks have been going on since ages. Yes, world peace talks. So guys, दुनिया में शांति की बातें. अभी अगर आपको पता होगा तो राहुल गांधी ने एक 11-12 दिन की वो निकाली थी रैली, भारत जोड़ो रैली. तो यहाँ पे हम गाइस ये क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू कीप एवरीथिंग इन पीस, सब कुछ शांति से रहे, लोग शांति से रहे. अब जैसे रशिया की राहुल वॉर गांधी चल का रही है. तो मैम वर्ल्ड टॉक पे कैसे बोल सकते हैं राहुल गांधी को? क्यों नहीं बोल सकते? अब आप देखिए रशिया की वॉर चल रही है. वो मैम तो इंडिया की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो वर्ल्ड लीडर का वो इन्फ्लुएंस होगा. थोड़ा सा जोर से बोलिए अभिषेक, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं. मैम मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो नेशनल लेवल का है ना जो राहुल गांधी कर रहे हैं. I am just giving an example. मेरा आगे तो एग्जाम्पल सुनिए. Now guys, if we are talking about world, तो आपको पता ही है रशिया की और यूक्रेन की वॉर कितने टाइम से चल रही है. इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 months आई बिलीव. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब रशिया ने कनाडा, यूएसए इनको भी जो है क्या कहते हैं उसे धमकी दी है. सो वॉर के लिए बोला है. सो ये प्रॉब्लम चल रही है ना, क्योंकि इससे बाकी कंट्रीज भी अफेक्ट होती हैं. ऐसा नहीं है कि अगर 2 कंट्रीज में वॉर चल रही है तो बाकी कंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन वॉर से मार्केट पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है. एनएफटी नीचे बहुत नीचे आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर. तो गाइस ये वर्ल्ड की ही बात हो गई. अगर 2 कंट्रीज भी आपस में लड़ रही हैं, 3 लड़ रही हैं, 4 लड़ रही हैं, पूरे वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है. नाउ this is a simple example, okay, or we can say a simple sentence. The world peace talks have been going on since ages. सालों से ये दुनिया में शांति की बातें चल रही हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल. कहते हैं ना कि जहाँ बर्तन होते हैं, 4 बर्तन होते हैं, तो वो खनकते ही हैं, राइट. सो लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, वेदर इन बिटवीन 2 कंट्रीज और अमंग 3-4 कंट्रीज. So guys, here हम शांति की बात करें. That's why the spelling will be PEACE, not टुकड़ा वाला PIECE. I hope this is clear. वो भगवान लड़के गए, हम लोग तो आदमी है मैम. दीपेंद्र what? वो लोग लड़के गए? वो तो भगवान भी लड़के गए, हम लोग तो इंसान है. So true, Dipendra, so true. Yes. Perfect timing. Mahabharata. Yes, Ramayana, exactly. Right, good example. I really felt strange because it is the first time that you have spoken in my class. I was like, ये किसकी आवाज है? Sapna, you were saying something? I was telling that to reduce population, such war happens.
We can say that even in COVID, now people were assuming that this COVID happened because the population has increased a lot. So to decrease the population, the nature is now Balancing. that's everything back. What we have done wrong with the nature. Right. Yes, it was a torment. Yes. All right, guys, moving ahead. Ram likes a lot of toppings on his pizza, but Anu likes hers plain or plain. Very easy. Russia will be defeated by hook or crook. No, I don't think so. Russia is very, very strong. It has the strongest army, and second, very smart. Putin is No, not ma'am. It smart. has a like largest number of nuclear atoms. Yes, So it exactly. can't have. मान ही नहीं सकती मैं. Okay, so guys, let's discuss the answer. Shraddha. Ram likes a lot of toppings on his pizza, but Anil likes plain. So guys, I believe everybody eats pizza, everybody loves, I cannot say loves, but likes pizza. So, you know, we have toppings, different toppings, onion, corn, paneer, cheese topping, jalapeno. There's so many, right? So we are talking about two people here, Anu and Ram. So Ram likes a lot of toppings. He likes a lot of like farmhouse pizza. तो सब कुछ होता है. All the veggies are there. But Anu likes Anu. Yes, I like mine plain. मुझे बिल्कुल भी topping वाला pizza नहीं अच्छा लगता. I like margarita. तो plain guys, हम यहाँ पे सादे की बात कर रहे हैं. Plain, सादा. For example, your shirt is plain. It has no print. It has no pattern. It has no design. Plain, सादा. Plain. मैंने ये action भी किया था just to let you know. Plain is airplane. Plain. Sada, Plane, plain. Moving ahead. The polar dash is found in the Arctic Circle. Polar bear, bear. हम बाहर से इंसान बने तो अभी तक बंदर की प्रजाति लुप्त जाएगी. जो अभी बचे हुए बंदर हैं वो क्यों इंसान में परिवर्तित नहीं होते हैं? Yes, my question is same. Whatever is your name, life on earth is a secret seal for But eternity. ma'am, I would, if you allow me, then I can answer it. I totally agree with you, Ramin, that life on earth is a secret and it is sealed for eternity. Maybe we'll get the answer after we die. Maybe not. Yes. So let's discuss the answer. Subhash. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The polar bear is found in the Arctic Circle. Yes. Yes. The polar bear, B-E-A-R. So guys, please focus on the pronunciation. B-E-A-R, bear. हम teddy bear बोलते हैं. That is also same, bear. ठीक है, मैंने काफी लोगों को बियर बोलते हुए सुना है. पोलर बियर भालू, टेडी बियर. तो गाइस बियर नहीं होता, बेयर होता है, बिकॉज यहाँ पे दो वाउल्स एक साथ है, ई और ए. देयर आर टू वाउल्स दैट आर टुगेदर, सो वी आर सपोज टू साइलेंट वन ऑफ द वाउल साउंड विच इज ए. हम ए को साइलेंट कर रहे हैं तो BER, बेयर. अब जो लास्ट वाला है, जो ये वाला बियर होती है, इसे बियर बोलते हैं, इसे बेयर नहीं बोलते, बिकॉज इसमें दो ई है, दो वाउल्स, डिफरेंट वाउल्स नहीं है, सेम वाउल्स है. तो बियर. फर्स्ट वाला भी बेयर है, सेकंड वाला भी बेयर है, थर्ड वाला बियर है. Now who will tell me the meaning of the first BARE, bear? Ma'am, Ma'am, it's a इसका verb मतलब to tolerate someone or something. तो मैम bear. सीधे साथ बोला मैम है. इसका Yes. मतलब होता है बंजर. सहन करना मैम. नो मैम, इसका मतलब होता है बंजर. Yes. बेयर, barren land, Barefoot. Don't go Barefoot, yeah, outside ma'am. there. नंगा. Sorry, ma'am. Yeah. नंगा, barefoot, नंगे पैर हम बोलते हैं, नंगे पैर. ठीक है. So don't go out barefoot. Yes. We have bare infinitives, ma'am. Yeah. Bear. Infinities वाला मुझे समझ नहीं आ रहा विशाखा, what you are saying. We have one type of infinitive, na bare infinitive. We say bare infinitive without two base form. Okay. Ma'am, can I say it?
You can, Subhash. First one, ma'am, bare means Mhm. with no glass covering it. Yes, yes, something which is not, the glass is bare, it is not covered, your feet are bare. Okay, yes. Okay, and guys, just one more thing. If someone is not, if someone doesn't believe in any theory, it doesn't make that person theist or atheist. If a person in the comment box is saying that I do not believe in Ramayana or Mahabharata because there is no evidence for these things, so that doesn't mean that person doesn't believe in God. Please understand this. But that means that that person is not aware of the things. That person. Yes, thank you, Abhishek, to support my version here. Yes, maybe Who was that legend who told that Ramayana and Mahabharata is wrong? सचिन प्लीज कान खोल के सुना करिए. रॉन्ग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एविडेंस की बात हो रही है. that there is no evidence for these things. Okay, really? यहाँ पे बहस नहीं हो रही है. सो प्लीज आप लोगों की अपनी, अगर आप रिलीजन के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पे किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है. यू नो, मेरी हिस्ट्री टीचर थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमारे पास प्रॉपर टॉपिक था. इन माय कॉलेज आल्सो गाइज आई हैव लर्न क्लासिकल लिटरेचर. मेरे पास इंग्लिश ऑनर्स करी है मैंने, मेरे पास क्लासिकल लिटरेचर था जिसमें मैंने रामायण महाभारत सब कुछ पढ़ा है. एंड यू नो व्हाट माय टीचर यूज्ड टू से व्हेन शी यूज्ड टू टीच इन माय क्लास, कि देयर इज नो एविडेंस. ऐसा कोई एविडेंस नहीं है. इट इज अ फिक्शनल स्टोरी. अब आप सोचिए, एक प्रोफेसर मुझे ये बात बोल रही है जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी होगी, प्रॉपर वो टॉपिक पढ़ा है और तभी वो पढ़ा रही है. तो इट्स ओके. इट डजंट मीन शी वाज नॉट हिंदू, शी वाज नॉट रिलीजियस, शी वाज नॉट बिलीविंग इन गॉड. Okay, ऐसा कुछ नहीं है. Just 1 minute. I have also read the ancient history. Guys, just 1 minute. Let me complete. Just 1 minute here. Means No, on I'm which story that? Here. Please listen properly. Okay, so the thing is, because they are speaking, because they have researched on it. ठीक है. अब दूसरी बात करते हैं रिलीजन के हिसाब से. तो वी ऑल बिलीव दैट हाँ रामायण थी, महाभारत थी, वी हैव गॉड्स, हिंदू गॉड्स 2 crore जितने भी gods हैं, it's okay. But the question is, if you are asking someone that if you don't believe in the theories, you are theist or you are atheist. So this is wrong. Okay. So it was an epic story. मेरी टीचर ये बोला करती थी, it was an epic story. ये किसी की सोच है, ये किसी के कैरेक्टर्स हैं दिमाग के, जो किसी ने स्टोरी लिखी है. वो ये नहीं कहती थी कि गॉड्स नहीं है, वो कहती थी रामायण और महाभारत की जो स्टोरी है वो किसी की दिमाग की खपज है, जो भी है. ठीक है. बिकॉज आई हैव स्टडीड क्लासिकल लिटरेचर इन डिटेल. मुझे सब कुछ पता है व्हाट हैपेंड टू द्रौपदी. आई नो द डाइसिंग जो पांडवों ने हारा था. मेरे पास सारे, मैंने सब पढ़ा है ये इंग्लिश में, पूरा सब्जेक्ट. Can I say something? Yes, Abhishek. I have also studied ancient history, and we have found lot of, like, on the basis of carbon dating from the first order reaction of the chemistry, and we have found lot of, you know, historical place and all the evidences that we have also put in the, like, everywhere. And even the recent research is been going on the dancing of Shiva, and which has been approved by NASA as well. So, oh, nice. Yeah, it is in 2012, and due to the cosmic radiations of that, so it is evident. All the evidence, we have put. So we can't say that there is a. That's good to know. That's good to know. See, only a knowledgeable person knows this. जैसे अभिषेक ने बोला, if someone doesn't know, is that it's not like they are against it. They just don't know. Yeah, Sachin, now please go ahead. लड़ना नहीं है. That's what I'm saying only. They're just having a healthy conversation. No, ma'am, you're correct. Even the Next US slide. can defeat Russia, as Russia allocates most of the budget in building their armed forces. Yes. All right, guys, let's move. And you know that bridge that is जो between Sri Lanka and बनाया था लंका जाने के लिए, that is there also. और वहाँ पे and also Dwapar and Ramavaradi. Yeah, I don't know the name of the bridge, but yeah, because I have learnt all these, so I know. I have a vast knowledge. Ram Setu, ma'am. Ram Setu. Ram Setu. Yeah, he was just telling me. Ram Setu. Yeah, ma'am, it is the evidence of Ramayana. Yes. अब जिसको नहीं पता. Ma'am, but this is strange that a professor is saying that it was fictitious story. Commendable. Yeah.
वही सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, अब सबका अपना अपना पढ़ाने की बात होती है, तो हो सकता है उन्हें एविडेंसेस का पता ही नहीं हो. शी वाज अनअवेयर अबाउट इट. आई स्टिल रिमेम्बर हर नेम. शी वाज आकांक्षा. She was Hindu. And it is like, like Pakistan considered themselves as a victorious in 1975, 1971, sorry, 1965. All they used to like teach that to their students that we have won all the battles against India. So it is like that. It is depend on your idea of thinking. So we should not. Ma'am, in just one thing, in London there is one museum where all the evidences of Sindhu dynasty and all Mahabharat elements, whatever the Shastra, Astra belong from Kurukshetra, it is all there. And everybody knows that it is correct. But still this... Everybody, again, Sachin, you cannot say everybody. People, most of the people know it. जिन्हें interest है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं है उन्हें नहीं पता, right? अब अगर ये सवाल आप एक रिक्शे वाले से करेंगे उन्हें पता होगा नहीं, बट अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट से करेंगे उन्हें पता होगा, बिकॉज दे रीड अबाउट इट, दे लर्न अबाउट इट. उन्हें पता है कि भाई हमारे एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. And a curious person who is always curious to knowledge, to gain knowledge, right? Perfect, guys. So bare means naked, nanga, without covering something. Bare, bhalu, dusra, or beer, you know it. The operation was dash painful. Quite painful. Choose the right option. America खींच रहा है वॉर को, यूक्रेन को हथियार. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Milan. Good afternoon. Thank you for joining. Thank you, Pratap. Very good afternoon. Are you able to hear me, Pratap? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. बस पूछ रही थी, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? Yes, ma'am. Yes. Okay, Pratap and Milan. बहुत अच्छी आवाज आ रही है आज तो. हाँ. Yes, ma'am. ठीक है. ठीक है. No issues there. Okay, I'll just come back. Very good afternoon, all of you. How are you all doing? Thank you, Sumit, for joining us. Good afternoon, Sojay Samuel, Nitish Kumar, Prabhat Tiger. I'm absolutely fine. Good afternoon, Vipin. This is Milan and Monu Charvan. Very good afternoon, all of you. Yes, I can see Pandi Kunthamu Kuntama Mahi. So I'll call you Mahi. It's a very long name for me. Vipin, very good afternoon. Thank you for joining. Ankit Chauhan, how are you doing, Ankit? I hope all is fine with you. This is Bhageshri Chauhan. Thank you for joining. Sumit, thank you. I hope now you can hear me clearly. Yes, ma'am. Farhan, very good afternoon, Sumit. Farhan Aslam, Mayank Rawat, good afternoon. Sushil, KRK, Sahil, Shell. Okay, Vipika. Thank you, everyone. The names which I'm taking for joining us: Rajkumari, Bittu Masif, MT21PE017, Rohit Kumar, Inayat, Rahman Khali. Thank you for joining. Shiva Shankar, Altamas Kabir, Meena Minar,
Chandan RS22, Razi Karmeet Singh, Ajay Kumar, Disha Sharma, Inayat, went after doing the daily chores. What do I say about it? What are the regular speaking activity? But see, all these activities that we have got for you, obviously they have some kind of, or rather say major learning of language also, the English language that we have. So just sit tight, take your notepads and write it down wherever required, because today all the slides from 1st to 17, that means even if you want, you can note it down on your notepads. Okay, my plan for a weekend kind of a thing. What are those sentences? What are those regular direct speech that I can use? We did passive yesterday. So the active voice that we have, what is the way I can speak it to the other person? Each slide has got dialogues. Each slide has got, rather, the first slide has got around 4 to 5 dialogues, if I'm not wrong. Just sit down and copy it. Besides, whatever I'm just trying to explain it to you all, you should practice it by doing a recording button from your phone. So what am I exactly trying to say? That whatever sentences you see, note it down, open your phones. There is a recording process that you have. Read the sentence and then try and speak it in a manner where you are trying to say it to someone else. Only then this particular class will be fruitful for all of you. Let's get started. I can see a lot of students, those who have joined. I hope you all are fetching your notepads and pens and getting ready. So another second, I'll just start. Anmol, Sakia, Nitesh, Muskan, Farai. This is Lakshmanan, Anju, Saika Asif, very good afternoon. Anju, Manish, just a second. Anju, Manish, this is Amandeep, Mukesh Dash, Rajesh, Thomas, Prabhat Tiger, thank you for so many different colors and pens there. I think that's the weekend planning that he's trying to tell me. Nitesh, Rohit Kumar, thank you for joining us. I'll just speak to you. Sathi, Hassan, Chalasni, Mahesh, Teja, Rajdhani, Girase, thank you for joining. Very few members have joined today. I don't know, might be there is one class getting completed and they all are joining us. That might be a reason. So before I start, Rohit Kumar, you have joined us from which place? Is this the same Rohit who has been joining us from past few days? Yes, sir. It's the same Rohit. Rohit, you joined from some other phone. Ma'am, I'm Rohit Kumar. आज थोड़ा सा आपने जिस डिवाइस से ज्वाइन किया है वो मुझे थोड़ा अलग लगा, MT21 HPE 017, इसलिए थोड़ा डाउट था कि कोई और ने ज्वाइन किया है या ये वही है। जी, थैंक यू रोहित, स्टे ट्यून्ड देयर। हाँ बोलिए बोलिए। My roll number. Okay. Name Acha. So I want today the Milan and Sumit with me. Milan and Sumit, I'll be showing you the first slide. This slide has got a little long dialogue. I'll not say very long, but thoda sa. आप पहले उसको दोनों पढ़ो। सुमित, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? Yes, ma'am. हाँ, so just read it for your own self before I ask you to start. Now, Milan and Sumit, please understand, when you will see the dialogues, you will understand, okay, it's a conversation happening between two people. So it's exactly something where two people are talking to each other. But before I allow you to do that, let me just quickly tell you that we are here talking about the plans that we make. So the plan that I have on a Saturday or a plan which is there on a weekend, that means when it's a time we have a 5-day working and then 6th and the 7th day, we are just thinking of not doing anything. Now, if we are doing that, we have some lot of work which we do in our home. So that part is also included in our weekend schedule. So just think about it. Okay, what all schedule do I have after the part which Milan and Sumit have read? Then I will come and ask you that, ma'am, okay, we also do this, or I also have these kinds of work to do. So please pay attention. Denny Maurya, thank you for joining us. And I'll speak to Denny, and thank you, Krishna Reddy, for joining. You got a little late, both the boys there. Let's get started.
Come, let's start. So we have got, just see there Sumit and Milan. I'm not saying who is taking which slide, but you have to read the both slides there so that you get a feel of it, that what this particular slide is talking about. Milan, you will take the red strip. Sumit, you will take the yellow strip. If you are ready, we would like to start. Let me know. Yes, Prabhat, you're typing this for what? By the time both the students are reading it, can I have Denny saying hello to me? Denny Maurya? Are you there? Yes, Denny. कहाँ से जुड़े हैं आप? I see you joined from the chat. Uttarakhand, UK. You've joined from UK. Yes, ma'am. आप कहाँ से जुड़े हैं डेनी? India. India, which place? Uttarakhand. Uttarakhand. Okay, Denny. Stay tuned with us. And first we are having an interaction and a dialogue, and then we're actually talking about what do we do on a Saturday. So weekend का हमारा क्या plan है, जैसा आप देख रहे हैं, it's on your screen. Milan and Sumit, please start. Come. Okay. Hi, what do you do on weekends? There are a lot of things to do on Saturday morning. Okay, for instance, I get up early, but I don't make my bed. My wife makes my bed for me. that's nice of her. Then I prepare sandwich and we all have breakfast. Then who washes the breakfast dishes? I do not do the breakfast dishes. My maid does them, and she also tied up the house. Thank you, both the children, both the students there. Thank you so much. Danny, please keep yourself on mute. You cannot unmute unless I ask you, because it disturbs the class. Now here you see Milan and Sumit have read something for us. It's actually a schedule, actually something which has been done on a day when it is a relaxing day there. There is nothing much to do. It's my time, it's free time rather, I'll say. So there is something which is the person is asking. So I have the first question for everyone, whether you are on chat or whether you are with as a pro member, please answer everyone this question. Hello everyone, what do you do on weekends? Can you please tell me what are your plans on a weekend? The slide is in front of you. Okay, just raise your hands and tell me what do you do on a weekend? Yes, Alpana? Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Alpana. Yeah. Ma'am, this weekend I have planned that I will go for play Garba. Okay, but in otherwise, this is your plan for Saturday, Alpana. But my question is, what normally if it is there, what do you do on weekends? This is a planned weekend for yourself for the next coming, I think Saturday, tomorrow and Sunday that you are planning. So I just want to know, in normal weekend, what do you do, Alpana? Ma'am, for me, every weekend is normal for me, because every weekend, sometime my husband go office, so my weekend is normal as always. Now here, Alpana, the word normal has to be, this is the reason I am asking. Here the word normal has to be expressed. See here, did you see when they read this, if you had joined on time, they said, my wife makes my bed for me. So this making of bed का मतलब क्या है? जब आप रात में सो के उठते हो तो आपका पूरा बिस्तर जो है वो बिखरा हुआ होता है. चद्दर को झाड़ना, चद्दर को बिछाना, clean, putting the neat bed sheets out there if it is required, you know, placing things properly. If you've got water bottles there for yourself,
anything which you must be using, your gadgets, your laptops, your your night stuff that you use, whatever it is, everything is placed so that it's a new day and everything is done in a proper way. Now especially we're talking about a weekend क्या होता है, जब week खत्म होता है, end करता है. End कब होता है? एक Saturday और Sunday को. अब Sunday जो है ना, देखिए वो बीच में पड़ जाता है. वीकेंड संडे जो है वो मंडे की शुरुआत की याद दिलाता है, लेकिन सैटरडे एक पूरे हफ्ते को खत्म करता है. तो हम वीकेंड मानते हैं सैटरडे वाले दिन और संडे के आधे दिन तक लेते हैं हम ज्यादातर, क्योंकि संडे को प्रैक्टिकली बात है, ये बोलेंगे तो हम वीकेंड है, बट संडे आफ्टर संडे हाफ डे इट्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द मंडे. People, those who work and they try and prepare something and they put it in their fridge, they start working on Sundays. So that's the proper way of working. So here I saw Krishna Reddy raising hand and saying me that what he does on a weekend. So Krishna, will you please tell me what you do on a weekend, and very good afternoon. Good afternoon, ma'am. I go to on weekends at my farmhouse, ma'am, at my farm place. And what do you do there? Just to see. So do you just examine or like? Yes, ma'am. Okay, na, because you have to see if everything is completed in the week, whatever the work was assigned, or is everything fine? Yes. If you have, yes, ma'am. That's exactly. So you actually go to you plan to go to a farmhouse on the weekends to check that on the farm everything is fine and there is no other requirement there. That's what I understand. Thank you, Krishna. So what is happening here? There is this person asking, somebody is asking you, what do you do on weekends? Now, what do you do on weekends is a structured plan, which Krishna said that I go on my farmhouse on weekends. So that means it is all set. For 5 days I work, and for Friday and Saturday, I go and check that everything is fine on my weekends. When Alpana gave an answer, she said, sometimes my husband goes for work. So for her, weekends are something which is very regular and normal, doing the regular chores that she does, other 5 days of the days as well, like giving the tiffin, doing the regular household work. So it's not just going out, nothing. It's another 6th day of the week. But she has something else to say. She said, if there are no plans, we might go. So there are 2 things to understand here. Something, when somebody asks you for weekends, there are times when it is structured and planned that this is something which I'm going to do. If you talk about myself, on Saturday or on Sunday morning, it is fixed that I have to go to a particular temple. So whatever happens until and unless I'm unwell, I make it a point that on a Sunday, I visit a temple there. So that is a structure. But somebody coming over for a lunch or for dinner, or I am going for a party, or there is a party organized. These are those plans which you are going to structure, which you are going to make. So for that, you require proper sentence structure to express. So now when you see the slides, it's actually talking about your plans. So that is my plan. This is what I'm planning to. So here planning, what do you do on weekends is something which are not only talking about expressing that what is fixed, but things which are planned. So दोनों चीजों का ख्याल रखिएगा. कुछ बातें कभी-कभी ऐसी होती हैं जो structured है, planned है. देखिए, I live in a very big joint family. So if I buy any vegetable from a regular vendor, it becomes very costly for me. So on every Saturday or on Sunday morning, when I go to the temple, when I come back, there is a mandi, vegetable, full mandi where we get थोड़ी सस्ती वाली सब्जियां मिलती हैं. So वो भी फिक्स्ड है हमारा कि हम वहां जाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि फिर पूरा हफ्ता हमारा कैसे निकलेगा. So ये प्लान जब हम करते हैं किसी को वीकेंड्स के लिए बताने के लिए, दोनों चीज का ख्याल रखिएगा. सिर्फ मैं इतना सा कह रही हूँ, क्योंकि सामने वाला जब आप कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत कुछ है संडे को करने को, वो कहेगा जैसे, तो कहते हैं हम सुबह जल्दी उठते हैं, फिर मैं अपना बिस्तर मैं खुद नहीं लगाता, मेरी पत्नी करती है वो.
तो वो कहते हैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस ऑफ हर। फिर उसके बाद मैं सैंडविचेस बना देता हूँ तो ब्रेकफास्ट में, तो वो बिस्तर बना देते हैं तो मैं सैंडविच। बिस्तर बनाने का मतलब है प्लेसिंग थिंग्स एट प्रॉपर, क्लीनिंग अप द स्टफ आउट देयर। एंड उसके बाद जब तुम खाना खाते हो तो फिर डिशेस तुम्हारी कौन धोता है? फिर उसके लिए हमने एक हेल्प लगा रखी है, हम डिशेस नहीं धोते। ना दिस इज अ वेरी रेगुलर सेंटेंस। I think if you are in India, this is a very regular feature that we have. Because of the population, we have got a second help in our hands. So this sentence is important. My maid does them. She also tidies up the house. मतलब जो cleaning of dishes का काम है, ये sentence याद रखिएगा. My maid does the dishes. My maid does the dishes. बर्तन को धोना हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में वो जो जिसपे आप सब्जियां देते हैं, जिस प्लेट में आप खाते हैं, जिसके लिए जो कटलरी काम में आती है, उन सबको इकट्ठा डिशेस बोला जाएगा। सो माय मेड डज द डिशेस। जहां पे हमने बोला मेकिंग ऑफ बेड, मेकिंग ऑफ बेड मतलब आप बिस्तर से उठे हैं, उन चीजों को फोल्ड करके रखना, क्लीन करना बेड को, थोड़ा रूम टाइड अप टच करना, और फिर पूरे घर की सफाई करना। मेड डज द रेस्ट, क्या वर्ड है वहां पे? मेज डज ऑल्सो टाइड्स, शी टाइड्स, यहाँ पे क्लीन नहीं है, शी टाइड्स का काम किया है। नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग द वर्ड क्लीन, बट ये थोड़ा सा ज्यादा काम आता है। शी इज वर्किंग दिस वीकेंड। हो सकता है जैसा अभी बताया, अभी अल्पना just gave us this answer by saying that ma'am, it's not necessarily compulsory, it depends on my husband. If he's going on work on a weekend, then there is nothing happening. If he's not going, then I will plan out something. So here she can say he's working on this weekend. She can use this sentence if somebody asks, let's plan something for a weekend. So she can say, no, we cannot plan because he is working on this weekend. Is weekend pe wo kaam kar rahe hain. The only difference is the gender. Here the sentence is showing she. So it's talking about a planning. So this weekend planning means it's a future planning we are talking about, but it is something she is working. So this is something which is planned and this is confirmed it is happening. So it's a continuation sentence which we have taken. मैं मेरा बिस्तर नहीं बनाती हूँ। अब इसको सेंटेंस अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? Pro members get ready. I'll be asking you, Siddhi Rameshwar, thank you for joining. And all the students, I can see very less of students. I don't understand the reason. Continue to join. Krishna, will you please come forward and give me the correct answer for this? मैं मेरा बिस्तर नहीं बनाती हूँ। Krishna? I don't. Yes, ma'am. Yes. I don't make my bed. Okay. Did you had any other answer to say? I felt that. Were you trying to say some other answer? We cannot hear you. Yes, Alpana, you have to say something. No, ma'am, here. There is some error of internet there. Krishna, please stay with us and I'll call you back. Alpana, you have to say something. Yes, ma'am. Ma'am, I want to meaning of instance. For instance, acha. I'll just give you in a time. Give me 1 minute. So here you are talking about this word. ये इसकी बात कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि for instance मतलब तुम ये कह रहे हो, उन्होंने कहा ना कि अल्पना मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, lot of things to do. अब वो जब जैसे ही आपने कहा ना, आपने भी शायद शुरुआत ऐसी करी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो पूछते हैं ना जैसे तुम क्या क्या करते हो, समझ रहे हो अल्पना? हिंदी में कहते हैं ना जैसे, अच्छा क्या क्या करते हो, अंग्रेजी में कहेंगे फॉर इंस्टेंस, क्या क्या करते हो तुम? जो कह रहे हो ना सुबह तुम्हारे पास बहुत काम रहता है, मेरे पास तो बहुत काम रहता है वीकेंड्स में, तो वो पूछ रहा है जैसे क्या क्या करते हो, फॉर इंस्टेंस व्हाट? गॉट द पॉइंट अल्पना? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome there. Let's go ahead. I don't make my bed, Aditi Patel. All right, let's go to the next and try this out. Okay, Tamsila, the answer was correct. Shweta, correct answer there. Merab, Amas, Leela, Rani, Soje, Samuel, Shashikala, Shashikant. Punita, get ready. Yes, बिस्तर उठाना प्रताप, बिल्कुल सही बात है। बिस्तर पर मैं बेसिकली बेड बनाने का मतलब यही है, सिखाया जाता है। I'll just explain it to you actually why this word has come up. Yes, Punita, please come forward and good afternoon to you.
यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मेरी बाई बर्तन साफ करती है। माई मेड डज द डिशेस। Very, very, very important sentence for all of you, because it's a very common feature. I see it here. We don't normally, thank you, Punita. It's Welcome, not a ma'am. very Thank you, common, ma'am. welcome there. It's not a very, very common feature where people say that my maid does the dishes. She cleans the house. She takes care of the house. I see normally people speaking this language. No, let's make it specific. She tides the house. She cleans the house. She does the dishes. यहाँ कोई भी डिशेस, किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो डिशेस में बर्तन को साफ करना अंग्रेजी में डस द डिशेस बोला जाता है, वो कोई भी कर सकता है। प्रताप ने कहा बर्तन मेकिंग बेड के लिए बिस्तर उठाना। प्रताप, मैं आपको और आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ। यस, वो सो के उठाना था मैम, इसलिए मैंने कहा बिस्तर खुद नहीं उठाया। बिल्कुल सही बात है प्रताप, वो बिस्तर उठाना ही है, बट इसके साथ में जो लॉजिक अंग्रेजी भाषा देती है वो लॉजिक ये है कि अगर आप सुबह उठ के अपना बिस्तर खुद बनाते हैं तो आप अपने दिमाग में जितना भी काम दिन के लिए सोचते हैं वो सब स्ट्रक्चर किया जाता है और एक डिसिप्लिन तरीके से आप अपना काम करते हैं। ये सेकंड मीनिंग है। अगर मैं कहती हूँ ना कि मैं अपने बिस्तर को खुद बनाती हूँ तो सामने वाला उसका सेकंड थॉट लेके जाता है, अच्छा तो मतलब सुबह ये प्लान कर लेती है कि दिन भर इसको क्या क्या करना है। These are two thoughts there. So मैं आपको सिर्फ फर्स्ट थॉट पे रोक रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकली बिस्तर को उठाना, जिसपे ओढ़ना, चादर आप जो भी बोलते हैं उसको समेटना, उसको रखना, झाड़ना, उसको क्लीन करके बेड को रखना, जो प्रताप हमें कह रहे हैं अभी इसका काम मतलब सिर्फ यही है। थैंक यू प्रताप। Let's go to the next and try this out. Come. Thank you, ma'am. Welcome. Milan, please come forward. Tamsila, yes. Subhash, thank you for joining us. Rajesh, Ishad, Sharmeen, yes, are you there? Yes. Come, Milan. Yes, आपको जब मैंने आज कल कहा था शायद कि हम एक स्लाइड लाएंगे जिसमें तुम बहुत बोलोगे। मिलन, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने डरे डरे बोलते हो कि कोई तुम्हें वहीं आके पकड़ लेगा। कोई नहीं आ रहा तुम्हारे पास। Nobody is coming, nobody is questioning and nobody is judging. मैं बैठी हूं ना, आवाज में दम लाओ। जवान बच्चे हो, आवाज में दम लाओ। देखो वॉइस का मॉड्यूलेशन अंग्रेजी भाषा में बहुत जरूरी है। So keep that force with you. Okay, start, Milan. Yes. Pooja cleans the house after come back from office. After come back? Okay, after coming back from office. So अगर आपने ऐसे बोला तो ऐसा लगता है कि ओहो बहुत दुखी कर दिया मिलन से ये सवाल पूछ कर मैंने। Actually, okay. It doesn't give me a good feeling there. Even if I have to read a simple sentence, थोड़ा उसमें अपनी फीलिंग्स को थोड़ा उसको ऐसा बनाओ कि ये सेंटेंस शायद मेरे लिए ही है। शायद आप ये कहना चाहते हो कि मेरी वो जो बहन है ना पूजा, वो ही जब ऑफिस से आती है तो सब कुछ घर को साफ करती है। शायद आप ये कहना चाहते हो। तो आप किस मूड में बोलोगे मिलन इस बात को? क्या होता है नॉर्मली सामने वाले कहना चाहते हैं अरे मैं नहीं साफ वाफ करता, घर को मेरी बहन आती है वो करती है सब। एक ये एटीट्यूड हो सकता है आपका, और एक आप सिर्फ उसकी तारीफ करके कह रहे हो उसकी शादी हो चुकी है, देखो कितना काम करती है, पहले ऑफिस जाती है और उसके बाद में आके घर क्लीन करती है। किस तरह से रखोगे बात, है ना मिलन? तो उसी चीज का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पूजा क्लीन्स द हाउस आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। यू आर ट्राइंग टू लेट द पर्सन अंडरस्टैंड इट। सो खाली ऐसे मत सीखो कि केवल पढ़ लिया और हो गया, नहीं, डिलीवर करना भी सीखना है हम सबको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड ट्राई दिस आउट। प्लीज कम। Is Pratap interested? Pratap, hello? Can you hear me, Pratap? Pratap, can you hear me? अजमोल हुसैन, हाँ, मैं सप्ताह पर अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ। रुके प्रताप, रुके, थोड़ी देर रुके, सबको पढ़ने दीजिए फिर जवाब दीजिएगा। लेट देम टॉक। ओके मैम।
यू स्टे देयर, है ना? बस मैं आपको आवाज इसीलिए लगा रही थी, दैट स्टे देयर। मैं सप्ताहांत पर अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ। प्रताप, आई विल बी आस्किंग यू ईच वर्ड हिंदी का अंग्रेजी में, तब तक आप वो भी काम कर लीजिए। Ma'am, am I audible? Yes, Krishna, you are audible. You are audible. Yes, Pratap, please come forward. मैं सप्ताहांत के अंत पर अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करता हूँ। सप्ताह के अंत में आई लाइक hanging out with my friends on weekends. Okay, so the fourth one is the correct answer. Okay, now मैं के लिए आपने अंग्रेजी में क्या लगाया, इंग्लिश में? आई। सप्ताहांत, सप्ताह के लिए weekends. ओके। दोस्तों, लोगों, फ्रेंड्स। घूमना पसंद, यस मैम। घूमना पसंद, एक मिनट। हैंगिंग, हैंगिंग। वेरी गुड, ओके। के साथ, with my friend. Absolutely. So thank you, Pratap. Now here this word has become very जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है कि लैंग्वेज में चेंजेस जिस एनवायरनमेंट में जो लोग इस्तेमाल में लेते हैं वैसे वैसे चेंजेस आने लग जाते हैं। हिंदी में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द था स्त्री, नारी। जब इन्वेजन हुआ मुस्लिम्स का, तो इंडिया के अंदर स्त्री और नारी का शब्द बदल के औरत कर दिया गया, एंड देयर वर सम रीजंस फॉर देम टू बी कॉल्ड आउट। आज भी हम उसी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और पहले वक्त स्त्री और नारी में ही ज्यादा इस्तेमाल होता था। जैसे जैसे हिंदी भाषा में लोग, और सुभाष, आई विल जस्ट कम टू यू, जैसे जैसे मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड understanding about it, they started shifting to calling a woman as nari or stri. Here, moving out with friends, I move out, I go out, I am out with my friends. This is a very new version, hanging out with friends. And you know how this word has come up? जब आप एक हाथ दूसरे हाथ में डालते हो, ठीक है, दोस्तों के साथ पकड़ के हाथ चलते हो, वो हैंग करना होता है। जैसे आप कपड़ों पे, जैसे आप एक रस्सी के ऊपर अपने कपड़े डालते हो तो हैंग करना हुआ, वहां से ये शब्द निकला है। तो उसको वैसे ही याद रखिएगा। कीप दैट इन माइंड दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग My younger brother's name whenever you are is trying to have a Victor. good time there, we use this word hanging out. So I am trying to hang out or hanging out. क्यों? Because मेरा प्लान है मेरे दोस्तों के साथ, तो मैंने ing फॉर्म लगाया है। So that's when I say this take week my I'm going to dog hang for out a with my walk friends, today? or I would like to hang out with my friends, or I like hanging out. मेरी पसंद है Can hang out you करना। take Yes, my Subhash, dog please come for forward a and tell me walk what you have to today? say. Subhash, please come forward. Yes, Prabhat, I can see Tabina, Tamsila, your answers. No, it was Subhash who wanted to say something. Please come forward, Subhash. Saika Ma'am. also. Haan. Ma'am, slide has just come, ma'am. So I will speak Okay. later. Okay. Fine. Benny, would you like to speak something today, or you want to stay with us for some time and then you want to speak? Denny Moria? Which is your favorite day of the week? Thursday or Sunday? Okay. Can I have Sumit here, please? Yes, ma'am. Come. सप्ताहांत पर मैं अपना बिस्तर खुद बनाता हूँ। I make my bed myself on weekends. I make my bed. It's not bed. I make my bed. I make my bed Okay. You said myself on weekends.
You said the same sentence when I asked you to read the dialogues there. So ED का emphasize bed है, bed. हाँ, थोड़ा मुंह खोलोगे B और E के लिए तो अच्छे से बन जाएगा bed. Okay, I make my bed myself. मैं खुद करती हूँ वो काम, इसलिए वहां पे काम में आया है myself. अगर मान लीजिए the maid is doing it, so the maid makes my bed on weekends. That's way. But यहाँ पे I खुद ये काम कर रहा है, इसलिए myself लगाया गया है. Let's go to the next and try this out. Okay, Tamsila, Azman, Azal, Hanging, Saikia, Asif. Yes. I prefer relaxing on weekends. How many of you prefer to just sit and relax on weekends? कुछ नहीं करना, बस फोन चलाना है. वो गुरु माता है, वही जो कहती है वही मानते हैं. Today it's my laptop is really shaking too much. Okay, how many of you just sit and relax on weekends? My question for all of you. आपके हिसाब से रिलैक्स करना क्या होता है? कोई जवाब मत देना, चैट पे सब पोस्ट डालो, चाहे प्रो मेंबर्स हो चाहे चैट पे हैं. Everybody put it on the chat. I want to read it. Prabhat Tiger, you gave the preposition with. Okay, I make my bed myself on weekends. Prabhat and Shweta, all right. This is Zunaira, Arup, Habib, Rahul, Saddiqui, Saika, Tamsila, and Saika. Okay, relaxing. Shweta, how do you relax? That's what my question is. How do you relax? Give me answers. I prefer relaxing on weekends. I hope everybody knows the meaning of relaxing. Ankita, thank you for joining us. I hope everybody knows the meaning of relaxing. What is relaxing? Take rest. Hanji, take rest. Okay. Take rest. Okay. So how many of you relax yourself? In what way? सबका अपना अपना एक लॉजिक है कहने का कि मैं ऐसे रिलैक्स होता हूँ वीकेंड्स पे. तो ज्यादा सोना. Like I prefer to sleep on Sunday. Sunday afternoons, if somebody take my afternoon, I like, oh God, I love to relax by sleeping on the Sundays there, especially afternoons. Anybody else has any other thing to say? Nothing. आप अपने आप को relax Ma'am, some persons. बोलो. Some persons have some relaxation. Suppose some persons play the chess, then they can relax. They would relax. So I'm asking your answer there, Krishna. How do you relax yourself? It depends, na. I want to know because that will give me a lot of activities that you people might be doing. I relax with my family, ma'am, on weekends. Okay, you relax. So that is you feel relaxed while you are in your family with your family members. Yes. So you're not spending time, you are relaxing with them. That's so nice, Krishna. Yes, Alpana, please come forward. Yes, ma'am. Ma'am, I also want to chat with my family members and go outside, means for outing. So see, did you get what I'm asking? I'm actually asking what do you do on weekends kind of a thing. So now you are able to give the answers there. Thank you there. Yes, Punita, you had raised hand. Please come forward. I feel relaxed by listening music on weekend. So I feel সরকার, relaxed শবনম মীর listening এবং তিয়াশা দুলুই। on weekends. Perfect. আপনি অংশগ্রহণ করতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনার নামটি কমেন্ট করে How do ফেলুন। you relax? Hanji Punita? Thank you, ma'am. Ma'am, I want to ask কি গো one thing, ma'am. Relaxing. সারাদিন কেবল কাজ আর কাজ, কাজ ছাড়া তো পৃথিবীর আর কিছুই বোঝো না. Relaxing. কপাল, এত কাজ করেও যদি একটা নতুন বাড়ি করতে পারতে. দাদা যে নতুন বাড়ি কিনেছে তা দেখতে কতবার যেতে বলল, তোমার সময় হয় না বলে তো আমার যাওয়াই হচ্ছে না. তোমার দাদার মতো ঘুষখোর হলে বাড়ি কেন, রাজবাড়ি কেনা সম্ভব। আমার ভাইকে নিয়ে বিড়বিড় করে কি বলছো শুনি? ইয়ে মানে ও কিছু না, আসলে বুঝতেই পারছো আমার কাজটাই এমন, সাংবাদিক মানুষ, ছুটি নিয়ে বড় মুশকিল। खाना बनाते हो, म्यूजिक सुनते हो, सिर्फ यूं ही छत पे बैठ जाते हो, सोते ही रहते हो, फोन ही चलाते रहते हो, कुछ तो करते होंगे।
Yeah, man, actually, whenever like I get time, so I use most of the time on social media. That's all. Yes, that's the problem with all of us these days. Social media is another equipment sent to us so that we are all busy and this brain is dead. Can't help it. Please try and reframe yourself. देखो आप कितने घंटे बिता रहे हो. But weekends में एक relaxing करने का music के अलावा तरीका as a female I also have, which is like going to the parlor. I go to the parlor and relax myself. Sandeep Kumar, क्या करना चाह रहे हैं आप? Okay, so I go to the parlor for relaxing on any of my weekdays. Anybody else? Weekends. Anybody has any better idea? Anybody who likes to play something, golf or something? It could be any sports. भाई मेरे से तुम सब इतने छोटे हो, स्पोर्ट्स भी नहीं खेलते, करते क्या हो तुम लोग फिर? सिर्फ सोशल मीडिया. I play golf on Sundays. Oh my God, students. Subhash, come. I prefer swimming on weekends. You prefer? Swimming on weekends. Dreaming, sleeping, I didn't get that clearly, Subhash. Swimming, ma'am. Swimming, very good. That's what I'm asking. That's what I'm asking. Think about it. अरे भाई दोस्तों के साथ रह के भी हम वीकेंड को रिलैक्स करना मांग सकते हैं और कुछ नहीं तो मैं सारा दिन सोता रहता हूँ खुद को रिलैक्स करने के लिए. कुछ नहीं करता, बस बिस्तर में पड़ा हूँ, कुछ नहीं करना है, खाना ऑर्डर करो. I just chill out. I just don't do anything. So everybody has got their own way of doing the relaxation part. Yes, Subhash and Alpana, please come forward. Yes, ma'am. Ma'am, I like to play badminton. You like to play badminton. Shabash. Yes. This teacher of yours is a national player of badminton. I used to play. Thank you. I'm so proud of you. Come forward. Yes, ma'am. हाँ, Subhash. I wanted to ask you one doubt before 8th slide, ma'am. 8th slide. Acha, before 8th slide, okay. 8th slide. This? Not ma'am. It's 8th slide, ma'am. 8th? Okay. No. 7, ma'am. 7. 7, there is no slide. Ma'am, I like hanging on that, ma'am. Okay. Why don't we use the preposition to before hanging, ma'am? I like to hang out with my friends is correct. But if I'm using G-I-N-G, I have to use with, not to. Ma'am, sometimes the preposition to before present participle, ma'am. It's fine. There is no rule for using that. There is no particular rule for using the prepositions there. That it has to be a present participle sentence that we have to use. No, you have to understand this is taking in which direction. If you remember, I have picked up these prepositions, I think this week only. I think Sandeep remembers because she was putting it down. With and to. The logic is that we are using with for what purpose? To is used for what purpose? Not the tense. Tense का काम सिर्फ verb करता है. So you are right if you are saying I like to hang out. I like to hang out. I will be hanging with my friends. So that's a plan that you are making. And to you are using here just to let the other person know that that's my choice of doing it. So with is trying to combine the two thoughts there of friends together. I hope, I don't know how. I got it. I hope I'll try and resolve more for you, Subhash. Let's go to the next and a lot of time. Okay. Krishna Reddy, come forward, and Najmul Hussain, both of you come forward. Krishna, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Krishna, take your time. I know both of you can just start quick there. Krishna Reddy and Najmul Hussain, are you ready, both of you? Yes, ma'am. Take the red strip and Krishna take the yellow. Come forward. Okay, ma'am. I was wondering what keeps you busy on Saturdays. I clean the carpet, wash the floor, and collect all the rubbish. Then what does Raj do? Raj goes outside and empties the dustbin.
What else apart from that? He also goes to give the clothes. What do you do in the evenings? We go out to hang out with friends. Very good. Thank you so much, both the boys there. कहने का तरीका एक और था कि यार मैं सोचता हूँ तुम अपने आप को बिजी कैसे रखते होगे संडे सैटरडेज को। फिर मैं कारपेट की सफाई करता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ, फ्लोर्स को साफ करता हूँ और फिर सारा कचरा जो सारे हफ्ते का इकट्ठा हो जाता है उसको लेता हूँ और उसको खाली करता हूँ। तो फिर तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पार्टनर है, हो सकता है कि रूममेट हो, तुम्हारा साथ में रहता हो, भाई हो, व्हाटएवर इट इज, तो वो सामने वाला पूछेगा भाई राज क्या करता है? भाई राज जो मैं सारा कचरा इकट्ठा कर देता हूँ बाहर, उसको ले जाके डस्टबिन को खाली करके आता है। उसके अलावा क्या करता है? He also goes. Rubbish means, ma'am? हाँ जी? Rubbish means? Rubbish means things which are not required, things which you just throw it. Sometimes you throw the crumpled papers, sometimes you throw your tissue papers, you know, things which you don't need anymore. So all the whole day, suppose some kind of order, you have ordered the food, so might be those things are, the leftovers are also left there. So it's not put in the dustbin, but they are just left in the house. So that things which are no more required are thrown away, the rubbish things there. There are things which are collected from the kitchen. There are things which are just, see, I as a teacher, I have got my students coming here. So they have their own sharpening, the